Okay, so we will discuss the basic positioning method. Obviously, you must understand that the raw observable for any kind of positioning are only code based pseudo ranges or carrier phase measurements. So we have discussed these two methods or the equations for positioning for these two observables in the previous class, where we have seen the code based pseudo ranges as well as the phase based positioning. Okay, so in order to start that GNSS algorithm processing methods, we have we'll discuss about GNSS positioning methods that are comparatively they are planned as single versus relative positioning. This you need to little just focus it here because it's very simple. Static versus kinematic and real time versus post mission. Now what we are trying to say here is there are ways by which you can do the positioning and there are ways by which you could get the observables. So observables are collected with the help of code based pseudo ranges and carrier phase. That is the fundamental observables. No need to change or no need to deviate from your conceptual understanding that these are the fundamental observations. And once you have that observations in your let's say observation file, now you can think of whether you have to work for single point positioning or relative positioning, or you have to work with the static positioning or a kinematic, because these are the ways by which you can get the position. Okay, and then you have real time versus post mission. Okay, so GNSS positioning methods are explained in these 6 categories and they are comparatively presented. The GNSS ranging models and solutions are obviously those two, which is their fundamental observation, like model for positioning under code pseudo ranges. They could come, this the second one could come before one also, but for the time being it is presented in two. No need to deviate from your own basic points. And a model for point positioning using carrier phases, as well as model for positioning under code pseudo ranges. These are the fundamental equations. Whether you work with single, whether work with relative, whether work with static, whether with kinematic, whether it is real time, post mission, you all will use the code pseudo ranges or carrier phases as the observation. इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो वो एक बार पूछ सकता है कि मतलब what is the difference between 1 and 2. अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा. कहने का मीनिंग ये है कि once you switch on your receiver, you will get the code pseudo ranges or carrier phases, or both would be available. Now our objective is to how to use it, whether we want to use it as single versus relative, whether we have to use it as static or kinematic, whether you want to use it real time and post mission. So we can use it, there is no problem in that. Then we discuss the relationship between observables and parameters. So now what are your observables? Your observables are, Sumit bataiye, what are your observables? Sir, code ranges and carrier phases. Good. What are your parameters? Sir, those. बहुत सोच के बताइए, बहुत बेसिक है. जहां आपने P code and CA code. No. That's what I'm saying. Speak in front of the class so that you could understand. जब आपने कोड pseudo range और कैरियर फेज बोला तो कोड pseudo range कहां से आ रही है? वो तो CA कोड और P कोड से ही आ रही है ना? Yes sir. That's why it is called as code pseudo range. अगर वो
सीए कोड और पी कोड से नहीं आ रही होती तो उसे कोड स्यूडो रेंज क्यों बोलते हैं? यू गेट माय पॉइंट? यस सर। तो पैरामीटर क्या हुए फिर से सोचिए। आलोक बताइए। Sir, time of transmission of signal and receiving at receiver end. नहीं 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 बेटा नहीं, टाइम ऑफ एमिशन एंड टाइम ऑफ ट्रांस रिसीविंग द सिग्नल्स का ही यूज करके कैरियर कोड स्यूडो रेंज कंप्यूट हो रही है। पैरामीटर्स आर, हाँ बताइए कोई बोल रहा है? कोई और बताना चाहे? चलिए फिर से पहले पॉइंट पे जाइए। जीएनएसएस पोजिशनिंग मेथड्स, जीएनएसएस पोजिशनिंग मेथड से क्या कंप्यूट होके आएगा बताइए सुमित। देखिए आप लोग आधा करेक्ट हैं इसलिए मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूंगा तो आप लोगों को तुरंत क्लियरिटी मिल जाएगी। यू आर जस्ट हाफ करेक्ट, हाफ वे यू आर सेइंग थिंग्स आर इन राइट मैनर, थोड़ा सा हाफ का कुछ दिक्कत हो रहा है। बताइए सुमित। सर पहले तो हाँ हाँ, फेज डिफरेंस कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद स्यूडो रेंजेस। क्या चीज कंप्यूट होगा? तो फेज डिफरेंस कंप्यूट करते हैं सर, जाते नहीं, जाते। फेज डिफरेंस तो कंप्यूट होता है, उसके बाद आप रेंज कंप्यूट करेंगे, कैरियर फेज कंप्यूट करेंगे, दैट्स ओके। बट व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशनिंग? पोजीशनिंग में क्या कंप्यूट करते हैं? तो आपकी पोजीशनिंग में कंप्यूट होता है एक्स वाई जी। व्हाई जीपीएस इज यूज्ड टू गिव यू द पोजीशंस। Positions means x, y, z and time as an additional parameters. So when you say relationship amongst observables and parameters, so you are correct in saying that observables are code pseudo ranges and carrier phases because these are being observed. What are parameters? Parameters is your position, it is x, y, z and delta t, or we could also call it as a receiver clock offset. अभी क्लियर है? Yes sir. Okay. So when we discuss about the relationship amongst observable and parameters, we'll see that in the case of single point positioning with code and phase, when I say relative positioning, so in a static model and in kinematic model, what are the variations? Then we will also discuss correlation amongst observable between single difference, double difference. अच्छा देखिए, single difference, double difference, triple difference क्या है? They are the sub category of relative positioning. Relative positioning का जो broad concept है वो ये है कि you would be using one base and another as rover. ठीक है? जब आप code pseudo ranges का यूज करते हैं in relative positioning, that is named as Alok. When you are use, हाँ बोलो सर क्या बोल रहे थे आप? when you are using code pseudo ranges as part of relative positioning as observable, that technique is called as DGPS. Don't worry, DGPS तो हम लोग, हाँ DGPS आपको याद आया जब मैंने बार बार बोल रहा था कि when you are using code pseudo ranges as your core observable for conducting this relative positioning, that will be named as DGPS. तो जब लोग हल्ला मचाते हैं ना, हमने DGPS सर्वे किया, हमने DGPS सर्वे किया है, तो उस केस में DGPS सर्वे में they are using primarily this code pseudo ranges. इसी में हम लोग आखिरी में DGPS के बारे में लास्ट जो 5th पॉइंट है वो लिखा भी हुआ है, डिफरेंशियल GNSS और डिफरेंशियल GPS. बट जो रिलेटिव पोजिशनिंग है वो है when you are using the carrier phase as observable. So जब हम carrier phase as observable use करते हैं, तो in case of static model we try to form certain differences between base and rover observable, single difference, double difference, triple difference. Every difference
हैज इट्स एडवांटेजेस। ओके, तो मैंने कल आपके टीम्स पे एक कुछ कंटेंट शेयर किया है, आप लोगों ने देखा? क्यों भाई सुमित, कल जो कंटेंट शेयर हुआ है वो आपने देखा? अभी नहीं सर। उसमें एक हमने कंटेंट शेयर किया है, बेसिक जीपीएस प्रोसेसिंग ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस। उसको मुझे लग रहा है मैंने अपलोड किया है, बट आई डोंट नो वेदर यू कैन। है सर, है ना? हाँ। हाँ। अब आप इसको जरा पैरेलल ओपन करिए अपने स्क्रीन पे, इसको देखिए। ओपन किया आपने? यस सर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, जीपीएस डिस्क्रिप्शन, pseudo range observable, point positioning using pseudo range, carrier phase observable, relative positioning using carrier phase, introducing high precision GPS geodesy। तो जब आप इसको ओवरऑल ऊपर से नीचे तक देखेंगे, कहेंगे अरे आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट तो हमने देखा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्बिटल वाला तो अभी हम लोग को लैबोरेटरी में करना ही है, ऑर्बिटल डिजाइन सीक्वेंसेस वाला। तो ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करें तो सैटेलाइट हार्डवेयर, ये सारा चीज आपने देखा हुआ है। उसके बाद सीए कोड, पी कोड, एवरीथिंग यू हैव ऑब्जर्व्ड। स्यूडो रेंज ऑब्जर्वेबल कैसे बनते हैं, कोड जनरेशन, ऑब्वियसली इट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर कंसर्न राइट नाउ, बट कोड जनरेशन भी इसमें एक्सप्लेन्ड है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि जॉर्ग आउटपुट क्या होता है। then you realize that later on once you autocorrelation technique भी explained है, so it's a good content which I got so that you could initially will get the initial idea। फिर pseudo range observation equation का simplified model जो हम लोगों ने उस दिन भी present किया था, वो भी इसमें available है written content में। और फिर उसके बाद आपका जो distance equation है उसके through भी लिखा गया है, और फिर उसके बाद they are just simply trying to form the equations which are required for your so-called what should I say, required for the pseudo range। तो आप लोग सभी लोग पेज नंबर 15 पे जरा जाइए। 15 पे पहुंचे आप? देखिए जरा। सर ये जो P1, P2, P3, P4 के इक्वेशन एग्जैक्टली देखिए इक्वेशन भी लिखी हुई है। C tau minus C tau 1 2 3 4, 1 2 3 4 represents that these are the clock errors, satellite clock error। फिर उसके नीचे देखिए लीनियराइज्ड मॉडल दिया है, तो आज हम इसी मॉडल को समझने के लिए ही बैठे हैं। अब ये जहां का भी कंटेंट हो, कोई कंटेंट में बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। दिस डिपार्टमेंट ऑफ जियोमेट्रिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, है ना? तो अब आप अपने स्लाइड पे फोकस करिए, तो आपको आज वही मॉडल्स हम आपको एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं कि हाउ these models, how these fundamental equations of distance which we have written in the last class can be used for giving you the coordinates of that point। चलिए तो चल के देखते हैं। तो पहला फिगर आता है, लेट मी जस्ट आल्सो मिनिमाइज द स्क्रीन। तो पहली स्क्रीन देखिए, इट इज सेइंग दैट जीएनएसएस पोजीशनिंग मेथड, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें,
आप फिगर देखिए, इसेंस समझिए, ट्राई टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, and you can also read the content. So one is single versus relative differential positioning and SPP single point positioning. तो देखिए इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं. Primarily code based positioning is used in SPP. Coordinate of a receiver at unknown point are sought with respect to the earth reference frame by using the known positions of the GPS satellite track. And third is also referred to as absolute positioning and often just as point positioning. देख लीजिए, फिगर को समझिए और टाइटल को समझिए, फिगर को समझिए और देखिए कि क्या ये आप समझ पा रहे हैं. Any doubt? चलिए अब दूसरे रिलेटिव पोजिशनिंग को देखते हैं. इसको समझिए. What is this saying? Relative positioning. Since initially it was saying पोजिशनिंग का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? रिलेटिव पॉइंट. हाँ, एब्सोल्यूट. सॉरी, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग. हाँ, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग जो है उसका अपोजिट क्या होगा? रिलेटिव पोजीशनिंग. ठीक है ना. तो कोड एंड और फेज बेस्ड पोजीशनिंग आर यूज्ड टू कंप्यूट द बेसलाइन वेक्टर. अभी यहाँ पे बहुत बेसिक सा समझने का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द रिलेटिव पोजीशनिंग, so instead of going with the absolute manner where you get the xyz directly, you are computing the baseline vector between 2 points. That is the relative positioning. अब आप सोचिए, याद करिए, in your linear algebra you have written this vector form as delta x is equal to xb minus xa, या x delta xij is xj minus xi. That means the difference between two coordinates are represented as a vector. So similarly here the chord or phase based positioning are used to compute the baseline vector from a point of known position to point of unknown position, and thus we are computing the coordinates of unknown point. How? Since we are observing delta x, we know xi, we can compute xj by writing simple equation, linear equation. So coordinate of a receiver at an unknown point are sought with respect to receiver at a known point. The term differential positioning is sometimes used interchangeably with relative positioning. However, differential positioning is more often associated with a specific type of relative positioning which applies correction measured at a known site to measurement at a known site. That means we are applying correction in a differential GPS or differential positioning. We are applying correction at unknown point with the help of known point through certain
कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे देखिए आप एक लिखा है आरटीसीएम, आरटीसीएम से आपको वो बन के आ रहा है। तो दिस रेडियो ट्रांसमिशन कमीशनिंग मिशन, दिस हेल्प अस in transmitting the correction in a radio band form, as well as you have a modem at both end, at base end and lower end. We have in the laboratory. So hopefully you will all will come by 21st March. So we will have a dedicated 2-3 laboratory with the help of instruments, so that you could learn the instrument operation from the field itself. So we have this modem. So we have one pair of equipment where you have this modem kind of facility, where you will have one base modem, another is rover modem, and another is the Trimble R10 pair, where we will take the correction in a Wi-Fi domain. So you could do the RTK in real time, and so we will see that no issues. The same satellite constellation should be priority. I mean, what is the prerequisite? That the same satellite pair should be available to base and rover. We can work in both code phase as well as carrier code phase as well as the pseudo range. We have the radio link, so less information than RTK, and slow transmission, real time or post process results are available. So these are the relative position. Again, relative positioning is, instead of observing the absolute XYZ, we are observing the delta X, delta Y and delta Z. सर इन दोनों के सेकंड पॉइंट में एक बार मुझे एक्सप्लेन करें सर। इसका भी सेकंड पॉइंट और पिछले सिंगल पॉइंट पोजीशनिंग वाले का, दोनों का सेकंड पॉइंट सर सेम जैसा लग रहा है। देखो पढ़ो, यहाँ लिखा है नोन पोजीशन ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट। क्या लिखा है? नोन पोजीशन ऑफ जीपीएस सैटेलाइट। और यहाँ क्या लिखा है? So receivers at a known point. हाँ, तो नोन पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट तो कॉमन है, वो तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वो लिखी भी नहीं जाएगी, तब भी आपको मान के चलना है सैटेलाइट पोजीशन इन एन अर्थ फिक्स्ड फ्रेम आर नोन वेरी प्रिसाइजली, otherwise this whole GPS will collapse. You need to understand that the GPS satellite positions are to be known very precisely. But in the case of single point positioning or absolute positioning, you would directly get the absolute XYZ. But in the case of relative, you are getting the delta X, delta Y, delta Z, which is the vector, baseline vector between point of known position to unknown position. The known position is called as base. Okay. Any questions? And sir, how we will get the data for known point? Known point are something which is placed, if it is if it is placed well before, let's say in we have at MNIT we have established one base station. So let's say it is established permanently, there is a equipment over a point, so that will be called as base station. It will always be there. So it is considered that base station is computing its position in absolute manner, and user it is providing the XYZ. But while performing this setup of differential positioning, it again take the coordinate computation from the same pair of satellite in an independent manner and tries to get the difference between the values which is observed and it is actual values which are there beforehand, and the difference is considered to be as the error sources that is transmitted to the so-called rover, so that this much correction you can apply at this time. Suppose you have a base station at your one point which is established well before performing this session. So it has this XYZ very precisely known to it, because it has collected data of over month or years of data it has. But
when this performing this session, it is getting the data from same pair of satellites. So what it does, it try to compute the difference between two. What? That one, that the observables, with the help of observable, and try to compute the again same XYZ and try to find the difference between the two XYZ. That is one which has already been there with itself, and the one which is real time in computation. And that the difference between these two is the correction which it transmit to the rover. Okay. Any doubt? Sumit? No, sir. Check. Then you have static versus kinematic positioning. One is just look at the two figures, the four ABCD figures. Just observe it. These all type of positioning which you are observing here, you can experiment live in the laboratory. If everything is normal, you can just roam around with the receivers which we have, and these receivers are at par with the IITs. We have the establishment of the laboratory, there's no doubt about that. And you can access to these equipments and learn how to operate it, and simply you can roam around with the equipment and you can collect the data for different variety of purposes altogether. सर Yes. सर ये बेस लाइन वेक्टर मतलब ये डिस्टेंस पोजिशनल वेक्टर बिटवीन रोवर एंड मॉनिटर. हाँ. और ये डिस्टेंस मतलब हमें पता चल जाएगी, और ये नॉन मॉनिटर से और सैटेलाइट की ये डिस्टेंस, फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर लगा के ये इसका रोवर की डिस्टेंस, मतलब रिलेटिव पोजीशनिंग का मतलब यही हो रहा है. एग्जैक्टली अब आप समझिए, जो आपने चीज बोली उसको मैं बताता हूँ. द वेक्टर विच यू आर ऑब्जर्विंग, इट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड. अगर आपको डिस्टेंस निकाले तो आप क्या करेंगे? From your previous concept, square root delta x square plus delta y square. So delta. This is your mod of that particular vector. Okay. If you write as a mod delta x comma delta y comma delta z, so this will reflect the L2 norm as the distance between these two. Okay. And then if you use this delta x, delta y, delta z as pair of observable, and then you can write x2 minus x1 is equal to delta x, and if you know x1, you can write x2 as delta x plus x1. This is the principle. Okay sir, thank you sir. Okay. हेलो सर. हाँ. सर जैसे इसमें लिखा है स्टैटिक पोजीशनिंग, तो सर हमने लाइडार में से टीएलएस किया था, टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग, तो उसमें सर हमारा जो रिसीवर वो तो स्टैटिक होता है, और तो सर उसको हम कंसीडर कर सकते हैं ऐसा. और काइनेमेटिक में से जो हमारा एमएलएस होता है, मोबाइल लेजर स्कैनिंग, उसमें हमारा रिसीवर मूव करता है, तो ऐसे कंसीडर कर सकते हैं सर? भाई देखो,
when you have TLS, तो TLS में क्या करते हैं जनरली lidar or terrestrial laser scanner are not meant to get the point cloud in the global coordinate system directly. देखिए सिंपल सी बात समझिए. So जो TLS है उसमें they are not meant कि आप simply global coordinates में work करिए. GPS will provide you the global locations, okay, or the global coordinates for that station location. तो अगर आपने TLS को रैंडम भी एक जगह पर पोजीशन कर दिया है और वहां से आपने सिंपली डेटा कलेक्ट किया है, तब भी आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू यूज सर्टेन एल्गोरिथम्स, इंडिपेंडेंट एल्गोरिथम्स. एंड देयर इज अनदर वे इज where you are establishing your TLS. At that point, if you provide the GPS location of that point where your TLS is established, then the output of every point will be converted to global coordinates. So that is one way. Similarly, in the second manner, the GPS and the so-called IMU integration in mobile mapping system is used to find the trajectory of that particular vehicle. The primary purpose of GPS and IMU in mobile mapping system is to provide the trajectory position of the vehicle in between while it is collecting the data. Not meant for directly converting the global coordinates, but that is the byproduct you are getting. But yes, when you are using the kinematic positioning or kinematic principle you are applying, that can be applied in the mobile mapping system. Yes, that's true. That can be applied. But since what I'm saying is, in that mobile mapping or in terrestrial laser, the objective is different. Objective is to get the 3D point cloud of that particular surrounding. Okay. Thank you, sir. इस फिगर को आप सभी लोग देखिए एक बार. चलिए आगे बढ़ते हैं. इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, बहुत सिंपल फिगर है. सारे मेंशन पॉइंट लिखे गए हैं. रियल टाइम पोजिशनिंग, पोस्ट मिशन प्रोसेसिंग, रियल टाइम रिलेटिव पोजिशनिंग, पोस्ट मिशन प्रोसेसिंग फॉर रिलेटिव पोजिशनिंग, रियल टाइम पॉइंट पोजिशनिंग. तो एक बार फिगर समझिए, एक एक करके रियल टाइम वर्सेस पोस्ट मिशन को समझिए. तो एक है रियल टाइम, मतलब पोजीशंस आर कंप्यूटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, जैसा हम लोग बोलते हैं ना रियल टाइम में बताओ क्या हो रहा है. Second is post mission, where you will collect the data at both the receiver base and rover, and you will come back to the office and you will process the data. That is called as post mission processing, where your data is combined and reduced after all data collection has been completed. Real time relative positioning means requires a data link to transmit correction from monitor receiver at a known point to a rover receiver at an unknown point. That is transmitting the correction from rover to base to rover, sorry. Then post mission processing for relative positioning, that means requires physically bringing together the data from all receivers after an observation period. अभी आप पहले दो पॉइंट और बाकी के दो पॉइंट को डिफरेंशिएट करके जरा मुझे बताइए, कोई भी एक व्यक्ति बताए. That means I just want confirmation. What do you mean by real time processing, post mission processing, and real time relative positioning and post mission processing for relative positioning?
कोई बताइए भाई, अंतर तो बताइए। सुमित बताइए, डिफरेंस बताइए पहले दो में और नेक्स्ट टू में। यस सर। सर फर्स्ट वाले में पोजीशन को कैलकुलेट किया जा रहा है, तुरंत ही जैसे ही डेटा मिल जा रहा है तुरंत पोजीशन को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर रहे हैं विदाउट एम्प्लॉइंग द करेक्शंस। एंड पोस्ट मिशन प्रोसेसिंग वाले में पहले डेटा को कलेक्ट कर लिया जा रहा है, फिर उसको रिड्यूस किया जा रहा है कैलकुलेट क्या करने के मतलब हुआ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग? डेटा इज कंबाइंड एंड रिड्यूस्ड आफ्टर ऑल डेटा कलेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर रिड्यूसिंग मींस कि पहले जो वैल्यूज सैटेलाइट से रिसीव हो रही है फिर उसको सर रेफरेंस के थ्रू उसको कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जैक्ट पोजीशंस में। सर मींस जब 4-5 सैटेलाइट हैं फिर उनके सारे डेटा को कलेक्ट किया, फिर एक दूसरे के साथ रिलेट किया, देन फिर सर जो वैल्यूज मिली शायद उसको रिड्यूस करना बोलते हैं। नहीं नहीं, रिड्यूसिंग इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। रिड्यूसिंग होता है जब आप कार्टेशियन से डेटा लेकर के जियोडेटिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेटा लाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूशन। डेटा रिड्यूस किया आपने, ठीक है। और एक फर्दर रिड्यूसिंग तब और मानी जाती है जब आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हाइट से आपने लोकल जो आपका स्टेट प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम है विच इज नॉर्थिंग ईस्टिंग एंड अप, उस पे आप आए। So that is called as your when you apply your map projection also to get the state plane coordinate system of northing, easting and up. So that process is properly called as reduced after all data collection. Data is combined and reduced. तो लाइक में भी आप देखेंगे कि इनिशियल पहले चैप्टर में डेटा रिडक्शन के ऊपर एक कंटेंट लिखा हुआ है दैट यू शुड रीड। देखिए पहले दो जो हैं वो सभी को मैं बता दूं, वो लेफ्ट फिगर के हैं, पॉइंट फिगर ए के, जिसमें कह रहा है कि वो रियल टाइम पॉइंट पोजीशनिंग हो रही है। तो मैं जो समझना चाह रहा था आपसे कि आप मुझे एक्सप्लेन करें, वो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप बताएं कि इट इज पॉइंट पोजीशनिंग। द फर्स्ट टू इज फॉर पॉइंट पोजीशनिंग, द सेकंड नेक्स्ट टू आर फॉर द रिलेटिव पोजीशनिंग। अब आप देखिए क्या वो फिगर से एक्सप्लेन हो पा रहा है? सभी लोग देखिए। क्लियर हो रहा है? ए के रेफरेंस में सी को देखिए, दैट इज सिंगल रिसीवर का डेटा केबल से पीसी में दिखाया गया है, और डी को देखिए डबल रिसीवर के डेटा को केबल से कंप्यूटर में दिखाया गया है। आलोक, क्लियर हो पा रहा है आपको? यस। चलिए, रियल टाइम प्रोसेसिंग बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है। रियल टाइम प्रोसेसिंग में नो पोस्ट प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड, रिजल्ट्स आर इंस्टेंटली अवेलेबल। Two modes: real-time code RT-DGPS, real-time phase RTK. One is real-time code RT-DGPS and another is real-time phase RTK. अब हम लोग मॉडल्स की ओर चलते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे टू मेन टाइप्स ऑफ जीपीएस ऑब्जर्वेबल्स। वन इज कोड स्यूडो रेंज मॉडल, another is carrier phase model.
चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन तो सबको क्लियर होगी, उसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बार फिर भी आप अपने नोटबुक में लिखिए इस इक्वेशन को सभी लोग। I want you to be prepared with understanding every segment. आप जब लिख रहे हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू टी आई माइनस टी जे, तो क्या आप टी आई और टी जे को पढ़ रहे हैं एक बार? तो टी आई टी जे को पढ़िए। क्लियर है सभी लोग? अरुण, प्रवीण, हाँ, शुभम, लिख रहे हैं। नहीं मतलब क्लियर है? लिखना भाई, लिखना तो है ही, बट इज इट क्लियर? क्लियर इन द सेंस आपको टी आई माइनस टीजे जब लिख रहे हैं तो टी आई टीजे समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम सैटेलाइट पॉइंट ऑफ व्यू the delta term, delta j and delta I which you are writing, can you understand it? The tj star and ti star you are writing, can you understand it? शुभम बताइए। टीजे स्टार और टीआई स्टार पता चल रहा है सर। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़िए। Satellite clock time at signal emission in GPS time frame. ठीक है। Receiver clock time at signal reception in GPS time frame. हाँ चलिए, अब शुभम के माध्यम से सभी लोग समझिए क्या है। आपने सैटेलाइट की तरफ से सिग्नल भेजा, टाइम स्टैंपिंग की जीपीएस टाइम फ्रेम में, तो वो आई टीजे स्टार। सैटेलाइट का सिग्नल जो है रिसीवर एंड पे मिला, वो बोला टीआई स्टार, पे टाइम स्टैंपिंग की जीपीएस टाइम फ्रेम में। दीस टाइम स्टार्स आर रेफरेंस टू clock time in GPS time frame. But ideally, if there is no error, there should be no deviation. But there are certain error in this measurement. That measurement error are written as delta I and delta Z. तो वो देखिए लिख दिया गया है, Ti is equal to Ti star plus delta I and Tj is equal to Tj star plus delta Z. अब जो डेविएशन है, जो एरर है, वो कम कब होगी? वो सैटेलाइट एंड के क्लॉक में जो ड्रिफ्ट है या जो एरर है वो कम होगी, बिकॉज दे आर एटॉमिक स्टैंडर्ड क्लॉक। तो डेल्टा आई वुड बी लेस देन डेल्टा जे, बट ड्रिफ्ट जरूर है। वो ड्रिफ्ट क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट की क्लॉक में बिकॉज ऑफ द वेरियस पर्टर्बेशन इन द स्पेस, वेरियस एरर इन द स्पेस, various forces acting over the satellite in the space, they contain the error. Okay, so because of this error is there, we need to consider it. And at the same time, what I must say is the delta j is error, which is satellite clock error, which is provided, the satellite navigation message are providing the A0, A1, A2 in the navigation message slide. I have explained this, that satellite clock drift parameters are provided so that you can compute that this delta t term with the help of those clock parameters. Okay, Shubham, are you getting it? Yes sir. Yes sir. Now this equation again, it is repeating from what we have learned in the previous class. This rearrangement, are you understanding, Shubham? The rearrangement which we have done of the pairs, why we have done that? The time difference calculate कर रहे हैं I और J के। But why this rearrangement has been done? See, the physical significance we also need to understand at the same time. तो काम तो पहली लाइन से भी हो जाता, काम तो इस लाइन से भी हो जाता था, फर्स्ट लाइन से भी हो जाता, फिर इसको रीअरेंज करके ऐसे लाने की क्या आवश्यकता थी?
सर हमने पहले जो इक्वेशन पढ़ा था xn माइनस एक्स स्क्वायर, वहां पर डेल्टा टी के जगह यूज करने के लिए एक्स फिर से बोलिए। xn माइनस एक्स स्क्वायर yn माइनस वाई स्क्वायर पोजीशन डिस्टेंस कैलकुलेट रेंजिंग के लिए, वहां पर डेल्टा टी के जगह यूज करने के लिए, डेल्टा टी की जगह क्या यूज करने के लिए? यहाँ डेल्टा टी जो अभी डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ नहीं बेटा वो तो बात ठीक है, बट व्हाई वी आर रीअरेंजिंग द रीअरेंजमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेल्टा टी इज ओके दैट यू वी आर नीड टू कंप्यूट दिस डेल्टा टी, बट व्हाई दिस रीअरेंजमेंट इज बीइंग डन? Because we need to also imply that pseudo range is not same as the geometric range. So ti star and tj star, if there is no error, there would be no delta term, so that cancels out. Okay, so if there is no error, ideally the pseudo range should be equal to geometric range, which is c multiplied by ti star minus tj star. But because there are errors in the system, in the processing of observable calculation, this delta t term is forcing the geometric range to convert to pseudo range. समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सभी लोग रुचि? यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। इस बार थोड़ा मेहनत करिए आप। ओके सर। सर ये जो रीजन बताया आपने इसके यहाँ पे चेंज करने का, एक बार और बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया सब मींस कि क्या पर्टिकुलर रीजन है उसके, हमने जो पैरामीटर्स चेंज करने हैं आपस में। चेंज नहीं करे, रीअरेंज किए हैं जो सर उसका, हाँ उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि ज्योमेट्रिक रेंज कैसे कंप्यूट हो रही है, विच इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द रेंज बिटवीन सैटेलाइट एंड रिसीवर। तो वो तब होगी जब हमें विदाउट एरर जो एक्चुअल एमिशन टाइम है और रिसेप्शन टाइम है वो पता होंगे। बट बिकॉज नो सिस्टम इज परफेक्ट, एवरी सिस्टम हैज एरर, that gives us this understanding, okay, geometric range is converting towards pseudo range with the help of primarily from clock error part. समझे? यस सर। ये देखो जो इक्वेशन लिखी है इसका सेकंड जो लाइन है जिसमें ब्रैकेट बना के रो लिखा गया है, फिर ब्रैकेट बना के सी डेल्टा आई जे लिखा गया है, ये बताता है कि आइडियली the delta term should not be there, but because no system is perfect, every system has component of errors, that's why it is saying that the geometric range is converting to pseudo range, and we have to deal with the pseudo range only. अब मैं क्वेश्चन इसके बाद का देने जा रहा हूं आप लोग को, इसके बाद मैं स्लाइड नीचे नहीं करने वाला हूं, इसके बाद मैं आपको जो प्रॉब्लम दे रहा हूं उसके लिए मैं 5-10 मिनट दूंगा और उसके बाद मैं सोल्यूशन अपलोड कराना चाह रहा हूं, वो समझ लीजिए प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग इट आउट इन अंडरस्टैंडिंग यू विद डिफरेंट, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड तो बहुत इजी है, अगर मैं शो कर दूंगा तो आपका माइंड नहीं चलेगा, एप्टीट्यूड आपका बढ़ेगा ही नहीं, आप हमेशा वही रट्टू तोता मोड में चलेंगे। तो अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि यू हैव 4 सैटेलाइट, तो जे की वैल्यू जो है वो, चलिए तब तक एक लाइन और ये देख लीजिए, this line you also see, so this is between pij, that is pseudo range is equal to geometric range plus error term. Now this error term is again written and by delta I minus delta j, because receiver clock error minus satellite clock error, but the satellite clock error is known. Why? Because it is known with the help of navigation message, and the satellite is telling the receiver that this much error is there in my error clock, you need to estimate yours. I am telling mine. तो जब उन्होंने I am telling mine बोला तो ये लेफ्ट हैंड में चला गया C डेल्टा J टर्म और राइट हैंड में बचा ज्योमेट्रिक रेंज प्लस रिसीवर क्लॉक एरर, ठीक है। Then this geometric range, which is the actual range between satellite and receiver, is written as, this rho ij is written as delta xj minus xi plus yj minus yi plus zj minus zi square root plus c delta ij, c delta I t. Now what you have to write? You have to write 4 such equation. Why? Because there are 4 unknowns. So 4 unknowns कैसे होंगे? X, I, Y, I, Z, I, and delta I. These are the 4 unknowns. How many satellites you need for getting a unique solution? 4. 4
सेटेलाइट फॉर यूनिक सोल्यूशन। तो आप ये जो इक्वेशन, इसमें रो आई की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हुए, ये दिस रो आई की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हुए 4 इक्वेशन पहले लिखेंगे, एंड देन यू विल राइट द v is equal to ax minus l form after linearizing the equations। तो अब आपका काम चालू होता है, आप मुझे v is equal to ax minus l के फॉर्म में ऑब्जर्वेशन इक्वेशन बना के देंगे while writing the 4 such equation because of 4 satellite in the visibility range, and with that 4 satellite you are writing these 4 equation, and after that you know that this is a non-linear equation because a square root term are coming up, you will linearize it। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी इक्वेशन क्या है, fxa is equal to la फॉर्म में लिखा गया है। You need to understand what is LA, what is XA, and then you linearize it and to make a form of V is equal to AX minus L। चलिए करिए, आपके पास 10 मिनट हैं। This is a quick revision of your previous semester class also।
हाँ भाई, किसी का आया नहीं अभी तक मैसेज? सुमित? यस सर, हम्म। कर रहा हूँ सर। क्वेश्चंस बना लिनियराइज करा है अभी हम्म। सर। लिनियराइज वाली इक्वेशन बताऊं? भेजो, देखें क्या कर रहे हो। भेजो, सभी लोग भेजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, तुरंत डालिए। 15 मिनट हो गए। शुभम, शिवम, रुचि, प्रवीण, अरुण, सभी लोग डालिए। सर हाँ मैंने लो, सर हाँ। भेज नहीं सकता मैं, सर लाइट नहीं है मेरे यहाँ, लिख ही नहीं दिख ही नहीं रहा, लिख नहीं पा रहा मैं। हैं क्या? सर लाइट नहीं है मेरे घर तो दिख ही नहीं रही है, मतलब कॉपी में कैसे लिखूंगा फिर मैं वो सिस्टम। कहाँ, कमरे के अंदर रखे हैं क्या? हाँ सर, मेरा कमरा अंदर है, मतलब लास्ट वाला, इसलिए। सर ऐसे ओरली बता सकता हूँ मैं, मतलब कैसे कोई नहीं, करना पहले और लोगों का आने दीजिए, फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। है। कोई दिक्कत नहीं है। सर भेजा है सर। हम्म। अभी आया नहीं? सर इसमें तो शो कर रहा है सर। चैट चैट में भेजा। ठीक है, और आगे, इसके आगे तो वो 2-4 लाइनें लिखी हैं तुमने, इसके आगे तो बताओ। बाकी लोग, शुभम, हाँ, शिवम, शुभम, शिवम आपका कहाँ है? आपने नहीं भेजा अभी तक। हैं? थोड़ा सा वैसे अरुण, अरुण, सब बस भेज रहा हूँ सर, 2 मिनट, 1 मिनट शुभम सर। शुभम आप भेजिए, शुभम, रुचि, प्रवीण,
प्रवीण को आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? यस सर। तो यस सर क्यों बोल रहे हो सर? और भेजो, जो पूछा जा रहा है वो भेजो ना सर, भेज रहे हैं। भेजो, पता तो चले कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ रहे हो। अभी भी नहीं आ रहा है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, मुझे मालूम है आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए देखिए। तो पहले तो इनिशियल पॉइंट लेंगे, the xi, yi, zi, which we have taken as a initial point as xi naught, yi naught, zi naught. Obviously, the correction term will be added on later on as per the iteration delta x, delta y, delta z. So function of xyz is written as function of I naught, y naught, z naught plus del f by del x naught, del xi naught into delta xi plus del f by del y naught into delta yi, delta f by delta zi naught by into delta zi. तो ये सब आपने किया ही हुआ है। स्क्वायर रूट वाला टर्म है, डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे लिख के आएगा ये आप देख ही सकते हैं तीन इक्वेशंस। सर हाँ सर, ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट भी तो है, तो मतलब डेल एफ बाई डेल टी भी तो करना चाहिए था। नहीं बेटा, फंक्शन टाइम डिपेंडेंट तब होगा जब आप काइनेमेटिक में जाएंगे। अभी तो हम स्टैटिक पॉइंट पोजीशनिंग के लिए मॉडल लिख रहे हैं। अच्छा सर, बट सर यहाँ पे देखिए एक्स जे, मतलब नीचे से सेकंड इक्वेशन में एक्स जे और फिर ये ब्रैकेट में टी लिखा हुआ, तो इसका मतलब तो टाइम डिपेंडेंट हुआ ना एक्स जी। कौन सा? ये नीचे से सेकंड इक्वेशन में जो टर्म है एक्स जे वाला, इसमें ब्रैकेट में ये टी भी तो लिखा हुआ है। इसका नहीं मतलब तो ये टी दूसरी चीज है। ये टी है, ऐसे समझिए कि जैसे लॉगिंग हो रही है ना, तो आपके लॉगर में पर सेकंड की लॉगिंग चल रही है, ठीक है? तो टाइम वेरिएबल नहीं है, टाइम में लॉगिंग हो रही है, टाइम स्टैंपिंग हो रही है। टाइम इज नॉट ए वेरिएबल हियर। वेरिएबल तो वो होता है जिसकी वैल्यू में ही वेरिएशन हो रहा है। तो टाइम t is equal to 1 second, t is equal to 2 second, t is equal to 5 second, t is equal to 10 second, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। टाइम स्टैंपिंग प्रॉपर है आपके क्लॉक के हिसाब से। वेरिएशन है कोऑर्डिनेट्स में, वेरिएशन है क्लॉक करेक्शन के पैरामीटर्स में। भाई आप ऐसे समझिए जैसे आप अपनी लॉगिंग करते हैं ना, लॉग फाइल बनाते हैं, तो जो लॉग फाइल हो रही है वो तो टाइम के रिस्पेक्ट पे है ना, उसमें टाइम वेरिएबल नहीं है, टाइम एक एक्सेस है। ओके सर। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि इसमें डेल एफ बाई डेल्टा टर्म क्यों नहीं आया है? क्योंकि वेरिएबल तो वो है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आपका ये टर्म है, दिस इज योर वेरिएबल डेल्टा आई। तो क्या डेल्टा आई के रिस्पेक्ट में करा क्या है? यस किया गया, तभी तो आप इक्वेशन जब बनाएंगे तो अभी आपको नीचे दिखाई देगा
आप इस इक्वेशन को पहले समझिए। सभी लोग, जो लोग लिखने में कोताही बरत रहे थे, उनको देखना पड़ेगा कि क्या उनको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। ये इक्वेशन क्लियर है? क्यों भाई सुमित? सर फर्स्ट वाली क्लियर है सर। जो आपने फिर दोबारा से लिखा ये 3 एक साथ में, सर ये थोड़ा सा देख रहा हूँ सर, अभी समझ में ये नहीं आ रहा। चीज, ये चीज सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा है सर, या उसके ऊपर वाला सर, उसके ऊपर जहाँ पे आप कर्सर ये, रखते थे उसके ऊपर, जो 3 साथ में, हाँ ये सर, ये अरे यार ये 3। तो पार्शियल डेरिवेटिव है यार, तुम पार्शियल डेरिवेटिव करो ना उस इक्वेशन का जो ऊपर तुमने स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन लिखी है। सर वही समझ रहा था कि स्क्वायर रूट वाली इक्वेशन सर एक्चुअली कॉपी में लिखी नहीं थी इसलिए। क्यों नहीं लिखी थी? स्क्वायर रूट तुम लिखोगे तो जो नीचे है भाई, आपका स्क्वायर रूट एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? क्या कह रहे हैं सर? स्क्वायर रूट एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? सर 1/2 अंडर रूट एक्स। तो बस अंडर रूट एक्स आ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वही नीचे है आपका टर्म। जो डेल्टा आई जे नॉट है वो स्क्वायर रूट वाला टर्म है, बस उसको लिख दिया गया है दूसरे फॉर्म में। वो इक्वल इक्वल है डिस्टेंस के। जब आप फंक्शन की वैल्यू डालते हैं तो वो डिस्टेंस ही बन जाएगी। यस सर, समझ गया सर। थोड़ा मैथमेटिक्स में तेज हुई है भाई आप लोग। चलिए, तो ये इक्वेशन, दिस बिकम्स योर इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो लिखे गए हैं वो फ्रेश पहले टर्म से लिखे गए हैं। पहला देखिए, पी आई जे टी इज इक्वल टू रो आई जे टी प्लस सी डेल्टा आई टी माइनस सी डेल्टा जे टी। ये दिस इज ए फंडामेंटल इक्वेशन। नाउ आफ्टर लीनराइजेशन द नेक्स्ट इक्वेशन बिकम्स रो आई जे टी को पहले ओपन किया गया है, बिकॉज रेस्ट इज लीनराइज्ड, रेस्ट इज लीनराइज्ड। ओनली रो आई जी टी को ओपन किया गया है, रो आई जे टी नॉट माइनस दिस टर्म डेल्टा एक्स आई, दिस टर्म डेल्टा वाई आई, दिस टर्म डेल्टा जेड आई प्लस सी डेल्टा आई। अब जिनको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा भाई, उनको तो वापस फिर से जीडीपी पढ़ना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होता है, क्योंकि ये स्कोप नहीं है इस कोर्स में। प्लस सी डेल्टा आई टी माइनस सी डेल्टा जे टी। अब आप देखिए सी डेल्टा जी टी तो राइट में जाना ही है, रो आई जे नॉट भी राइट में जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये कांस्टेंट हो गया। तो देखिए लेफ्ट में क्या ऑब्जर्वेबल क्या बन गए, पी आई जे टी माइनस रो आई जे टी नॉट plus c delta j t. This becomes your observation. Now on the right hand side you have observables, sorry, on the right hand side you have parameters and their coefficient plus unknown error term. सभी लोग इस इक्वेशन को उतारिए एक बार। I'm giving you 5 minutes. Just open up this equation in your answer sheet. Majority of the content in any of the book is only these simple mathematical equations. If you understand this, you can follow any book in the GPS domain from written by any author, because many of the universities, even in the IITs also, GPS is being taught as a theory course. हवा हवाई में बातें होती है GPS की, but you are lucky that this mathematical component is being explained here. And now this will help you in reading any of the content from the book. Obviously you need to self learn few more skills, but that will help you understanding majority of the content.
So I hope the equation is clear to all of you. Sumit, यस सर, इट इज क्लियर सर। वो बस इक्वेशन दिख नहीं रही थी ना, इसलिए समझ नहीं आता किसका वहां पे डिफरेंशिएशन किया गया है। okay. Now that's how this will look like in V is equal to AX minus L form. देखिए सब कुछ explained है, अब आपको सिर्फ rearrange करना है। तो A becomes your all coefficient of 3 partial differentiation and then 1 1 1. The X would become all the unknowns, which is delta X, delta Y, delta Z, and C delta I T. The L, which is the observable vector, which becomes Pi1T minus rho I naught T1 plus C delta 1T. इसी तरह for second satellite, for third satellite, and fourth satellite. So this V is equal to X minus 1 is clear. Now the X is ATPA inverse ATPL. So this, my dear students, is the fundamental backbone of your GPS data processing. In that backend, the least square processing is working for variety of GPS data collection. So if you have any question, we can discuss it here right now. But practice it. I mean, the segment which you have not practiced, you should practice it here. The equation is very simple. Again, I'm putting it up back so that you can understand this particular model is represented in the V is equal to AX minus L form. So with this, we stop here. In the next class, we will discuss about the model for carrier phase equation. But those who learned enough, they can try it on their own to write the equation for for the carrier phase equation in the similar fashion. The equation you already know, which is written. Any questions from your side?